welcome you all in my YouTube channel. So in the database management series, so आज का जो है तीसरा वीडियो होने वाला है. तो आज के इस वीडियो में we will discuss data models. So in the previous video, we have discussed about database architecture, in which we have discussed the schema like one tier architecture, two tier architecture, and three tier architecture. After that, we have seen the three schema architecture, and then we have also see data abstraction. Like data abstraction is generally you are hiding some data from the users, and some advantage of DBMS architecture we have seen. So today we will continue with the data models. So let's point out our topic heading, which is data model. So let's define it first. So a data model is a way to describe the structure of a database. So basically it describes the structure of any database that is called data model. So it it defines how data is stored, how data is connected, how data is connected, and what rule apply to the data, apply to the data. Okay. So data model is a way of describe the structure of the database as we have discussed. So it defines basically how is data is stored in the database, how data is connected, and what rules applied on the data. Okay. So in the note, just write it down. A data model acts as a bridge between real world real world problem and database design. Database design. Okay. So now we will see the purpose of data models. So let me change the color. So we will discuss the purpose of data models. So it basically provides a conceptual framework for designing database. Okay, and make communication between designer, developer, and end user easier in the easy way, or easily it make the communication. Or the third thing is like it ensure consistency and accuracy in how data is represented. So let's write it down. So provides a conceptual framework
for designing database. Next thing is like make communication between designer, developer, and end user easier. Okay. And the next point is ensure consistency and accuracy in how data represented, in how data is represented. Okay, so I think this is enough for the data model. So directly move towards the type of data models which we are using. So types of data, types of data models. Okay, so let's make a note like the types. First is hierarchical, hierarchical model. Okay. Second one is network model. Third one is relational model. Now the next one is ER model, and next one is object oriented model, and so yeah. So these all are the five types of the data model. So now we will discuss one by one, and we'll see also some advantage and disadvantage of each model. So let's start with the first model, which is hierarchical model. Okay, so the first model is hierarchical model. So it it organized data in tree like structure. I hope everyone know about tree. Like this is the root node, and these are the children node, and for this there are so many nodes are there. So like this, you can consider like a hierarchical structure. So this is written over here, like it organized data in the tree-like structure. And the second point is each record has one parent but can have multiple children. Okay. So for example, you can take it like your university is there, no?
Just take an example of university. So in the university, there are many departments. In the department, there are many courses available, and in the different courses, some students are there. So have you observed like it is making a hierarchical pattern? Okay, so it access using navigational method like move from root to leaf. Like I have shown you now like this. So this is going to be root, and these all are the like leaf. Okay, so let's remove this section. Just for your understanding, I have drawn that. So yeah, so let's see one example. So so here you can see like there is one root node. So this is root, and this is going to be root node. And from the root, there are so many child nodes there. So this is your level one, okay? And from each child, there are some ch from the each child, there is some children are there, okay? So this is called L2, okay? So this can be a good example of hierarchical model. I hope it is clear from the image also. So as an example, I have shown you here like university example. So let's see from the image for the better visualization and better understanding. तो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटी है, ठीक है? तो हमारे पास ये यूनिवर्सिटी आ गया। यहाँ से जो हमारा हर एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारा डिपार्टमेंट्स हो सकता है, and so many students are there, okay? So each department has some professors and some classes, and some student are like farmer, like जो भी आपका farmer करने का मतलब हुआ कि जो पास आउट हो चुके हैं, ठीक है? एंड सम करंट स्टूडेंट लाइक जो अभी क्लास में या फिर जो अभी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अपियरिंग है, अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जब भी हो तो इस टाइप के डेटाबेस को हम लोग हायरार्किकल डेटाबेस कहते हैं, ठीक है? Just for your better visualization and understanding, I have copied this image for you only, guys. So let's moving further. So next is network model. Okay. So the second is okay network model. So let's understand what is network. So organized data as graph, records connected by links. Connected by links. Okay. So a record can be, so the same thing, a record can have multiple parent and child child record. Okay. For an example, uh, a student
can enroll in multiple courses in multiple courses and a course can have multiple student. Okay, so I hope this example is clear for you. So this is example of network model. So this is another example of network model where you can see the produces is organic or non-organic, and the organic can be lemon, limes, grapes, but the non-organic also can be lemon and lime and onions or broccolis and all the stuff. Okay, so like that it's basically form a network. So this is called the network model. So let's discuss some advantage and disadvantage. So advantage. So the first advantage is like handle complex relationship better than hierarchical model. Hierarchical model. Okay. And next is more flexible. It is more flexible and some disadvantages also. So the first is complex to design. Okay. And second one is requires navigational queries. Okay. So this is all about the network model. So now we will discuss the relational model. Okay. So the third model is relational model. Okay. So let's discuss what it is. So it basically it is a more popular model among whatever model we are going to learn today. So please listen it carefully. So it organizes data into tables. So the first point about the relational model, like it organized data into table, or you can say relation. Okay. So next is each table has row which is called as tuples and column which is known as attribute. Okay. Let with first and attributes. Okay. So the next point is like use primary key and
foreign key to connect tables. So suppose when you have to connect the two tables, so you can use primary key or foreign key. Foreign key basically a reference, like reference of primary key from one table to the another table. Okay, so let's take an example. So example, student table. Student table are there in which roll number, name, and courses are there. Okay, and now course table are there in which course ID and course name are there. Course name. Okay, so this can be an example of like relational model. So now we will see some advantage of a relational model, and there is one disadvantage also. So we can see it now only. So advantage. So the main advantage are simple and widely used. Okay. The second point is supports SQL, lazy, SQL or easy query. Okay. And the third point, which you can note, is like a strong mathematical fundamental. A strong mathematical fundamentals. Okay. And there is one disadvantage also. So can you guess like what can be the disadvantage in this? Yeah, just take your time and just think like what can be disadvantage in the uh, relational model. So you are right. It can be slow for the large data set because it is in the form of table now. So when you are accessing a large data set, when you have a large data set, to accessing it can take more time. Okay, so this is only one disadvantage of this. So can be slower for very large data set. Okay, so I hope I am clear with the till now. So the next is which is very important as your theoretical portion, which is entity relationship model. Before that, just I want to give you one image of this relational model. Yeah, so you can see here like relational model. So for a student table, so there is some roll number of some student name and CGPA are there. Okay. So the primary key can be the roll number because always remember primary key is always unique. Okay. So here, if you can see the name can be repeat. Okay, for a student like there might be two Weber or two Neha in class can be present, and might be some CGP of two people can be match also. But the unique is always be the roll number or your registration number. This is unique. So this unique is called as primary key. This is always unique, and the name and CGPA can be duplicate also.
लाइक डुप्लीकेट कहने का मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास एक वैभव ऑलरेडी क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरा वैभव भी आ गया, ठीक। मतलब मान लीजिए कि आपके क्लास में दो नेहा नाम की लड़की दो बार प्रेजेंट है, ठीक। तो इस टाइप का कहने का मतलब हुआ। और यू कैन सी लाइक द रो will is called as tuple and column will be attribute. Okay, so I hope this is clear. So now we'll move further for the ER diagram. Okay, so just for my wish I want to explain it in detail to you guys. So let's discuss the ER diagram in detail. Okay, so ER diagram. ER diagram is also called as entity relationship diagram. Okay, so let's take a definition first. We are defining what is ER diagram. So the ER model, the ER model is one of the most important part of database design. It gives visual representation of how data is structured or connected in the connected in the connected in the real world. Okay, so I hope the definition is clear to everyone. So there are some component of ER diagram. So let's discuss it one by one. So the first component is, so let me write it, component of ER diagram. Okay. So first is entity. So an object in the real world that has an independent existence. Okay. So just note some point. Represented as a rectangle in ER diagram. Okay. And example is a student, course, and teacher. So these all can be an entity. Okay. So in entity also there are two types which you can call it as strong entity and weak entity. Type of entity. So you can call it as a strong
entity. So let's see what is a strong entity, like has its on primary key. Primary key is for a student, roll number is there. Okay. So in the previous video, I have shown you like here in the previous image. So roll number is unique for all the student. It can't be repeat. It can't be like if the one roll number is assigned to Weber, then one can't assign to Neha. Okay, or one can't assign to Harsh or Shreya. Okay, so like that. So yeah. So strong entity is known as which has on primary key, and weak entity are also there. Weak entity. So what is weak entity? Let's define it. Cannot exist without a strong entity. Okay, identify by a partial key. Partial key is for department of employee. So here the department of employee is a weak entity because it need a primary key, okay, to define it like what it is. Okay, to identify something we need some primary key. We need a primary key to define that is called as weak entity. Okay, I hope I am clear. So let's move further. So next is attribute. Attribute. Okay. So attribute is like describe properties of entity. Properties of entity. Okay. And the second point is like represented as an oval shape. Okay. ओवल शेप से इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंड एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट हैज attribute like roll number and age. Okay, so attribute वो हो गया जैसे कि मान लीजिए आप ये टेबल बनाए. ओके, यहाँ पे जो आपका एस नेम आ गया, स्टूडेंट नेम, roll number, age. So this all can be the attribute of the table. ठीक है, इसी को हम लोग attribute बोलते हैं. So there are basically four type of attribute exists. So let's discuss this one by one. So the first is simple attribute. Okay. Second one is composite attribute. Third one is derived attribute. And the last one is multi-valued attribute. So let's understand one by one. So simple attribute means it can be divided further, like age. Okay.
So this can be considered as a simple attribute. समझ में आ रहा है? Next is composite attribute. Composite attribute तो उसको बोलते हैं जो कि जो हमारा फर्दर डिवाइड हो सकता है। गेस करो क्या? फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ए स्टूडेंट, गेस करो कौन सा चीज है जो हमारा फर्दर डिवाइड हो सकता है? स्टूडेंट नेम, सिंपल है। लाइक द फुल नेम ऑफ ए स्टूडेंट यू कैन डिवाइड इट एज फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, लाइक दैट। ओके, सो derived attribute, तो derived attribute क्या होता है? Which is calculated from another attribute like age from date of birth। तो आपका एज जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, जो आपका डीओबी, मान लीजिए कि आपका डीओबी 14/8/2005 है, ठीक है? तो 14/8/2005 से आप जो है अपना डेट एज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एज से जो है आप जो है डीओबी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? प्रॉपर आपको अगर निकालना है तो आपको ईयर मैक्सिमम पता लग जाएगा, लेकिन अगर आपके पास आपका डीओबी है तो आप उससे जो है आप एज डिराइव कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं डेराइव्ड एट्रीब्यूट। एंड वन इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, so it can have multiple values like phone numbers, so one person can have multiple phone numbers, okay, like me only, मेरे पास ये अभी जो है 3 फोन नंबर्स है मेरे पास। So these all are the types of attribute. So next is relationship. Relationship. Okay. So what is relationship basically? It shows like how two entities are related. Okay. Shows how two entities are related. Okay. So it is notation is very important for all of, okay, for all of the which we have discussed now. So it is represented by the diamond, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट जो कि इनरोल कर रहा है कोर्स में, ठीक है? सो दिस कैन बी एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो इनरोल जो हो रहा है वो रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है हमारा स्टूडेंट और कोर्स के बीच का, ठीक है? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। सो द फर्स्ट इज वन टू वन, वन टू वन, okay. Second one is one to many. Third one is many to many. Okay. तो चलिए आइए अब समझते हैं इन सबको। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? तो वन टू वन का एक एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है? मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि अ पर्सन हैज वन पासपोर्ट, अ पासपोर्ट बिलोंग टू वन पर्सन, ठीक है? ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि एक जो पासपोर्ट है वो किसी एक आदमी का है, और वो पासपोर्ट जो है किसी एक आदमी के साथ बिलोंग कर रहा है, ठीक है? सो दिस कैन बी एग्जांपल ऑफ वन टू वन। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो। और सेकंड वन इज वन टू मेनी, ठीक है? तो वन टू मेनी का एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ, जैसे वन डिपार्टमेंट हैज मेनी स्टूडेंट बट अ स्टूडेंट बिलोंग्स वन डिपार्टमेंट। समझ गए? जैसे कहने का क्या मतलब है कि एक आपका डिपार्टमेंट है, उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपका ब्रांच जो है आईटी है, ठीक है? तो आप जो है आईटी में जो है बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन
बहुत सारा जो बच्चा है आईटी में उसका सिर्फ एक ही ब्रांच होगा आईटी। ठीक है, समझ गए ना? मान लीजिए कि आप जो है अभी आईटी में पढ़ रहे हैं, तो आपका जो ब्रांच है वो हो गया आईटी। लेकिन आईटी के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, समझ गए? दिस इज कॉल्ड वन टू मेनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट द थर्ड इज मेनी टू मेनी। ठीक है, तो स्टूडेंट का एग्जांपल लेके समझते हैं। लाइक अ स्टूडेंट कैन enroll in many courses and each course have many student। अब समझिए क्या कहने का मतलब, क्या बोलना चाह रही है। एक स्टूडेंट है जो कि जो इनरोल कर सकता है मिनी कोर्स में। मतलब बहुत, एक बच्चा जो है वो मान लीजिए जैसे आप ही हैं, तो आप मान लीजिए बहुत सारे कोर्स में इनरोल होंगे। लाइक सीएन हो गया, डीबीएमएस हो गया, आपका ओएस हो गया, एंड आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, आपका मैथ हो गया, आपका एनालिसिस एंड एल्गोरिदम हो गया अडा, आपका सीएन हो गया। ठीक है, तो आप ये बहुत सारे कोर्स में इनरोल हैं। उसी तरह ईच कोर्स, जितना भी कोर्स है वो उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका इलेक्टिव आया चूज करने के लिए, आपने सेलेक्ट किया ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन के पास भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, और एक बच्चा के पास भी बहुत सारा कोर्स है जिसमें से एक ब्लॉकचेन भी है। तो दिस कैन बी अ एग्जांपल ऑफ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है। हाँ, और एक और बात मैं आपको याद बता देना चाहता हूँ कि वन टू मेनी रिलेशनशिप जब भी होगा, तो इसमें जो है आपका प्राइमरी की जो है वो मेनी वाला बनता है। मेनी वाला बनता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो मेनी साइड होगा ना, वही जो है आपका हमेशा प्राइमरी की बनेगा। और मेनी टू मेनी में प्राइमरी की एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्राइमरी की होता ही नहीं है। इसमें जो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की, which is also called as composite की। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। सो till now we have discussed relationships in the ER model, and now we will discuss key in ER models, keys। okay, जो अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इधर हम लोग, मैंने आपको प्राइमरी की बता दिया, फॉरेन की हम लोग समझ लिए। ठीक है, तो आपको की का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले की देख लेते हैं। की इन ईआर मॉडल। ठीक है, तो मेनली अभी आपको आगे बहुत जाएंगे तो बहुत सारा आएगा, लेकिन अभी के लिए आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप में दो ही की अभी मैं बताऊंगा। फर्स्ट इज प्राइमरी की, विच इज ओके, एंड सेकेंड वन इज फॉरेन की। ठीक है, सो यूनिक आइडेंटिफायर, इजी रोल नंबर इन केस ऑफ स्टूडेंट डेटाबेस, ओके। एंड फॉरेन की क्या होता है? कनेक्ट कनेक्ट वन एंटिटी टू अनदर। ठीक है, तो वन एंटिटी को अनदर एंटिटी से जोड़ने के लिए जो है हम लोग प्राइमरी की का यूज करते हैं। इट कैन ऑल्सो कॉल एज रेफरेंस की। ठीक है, याद रखिएगा। सो now we will see some advantage of ER model। We have discussed so much about ER model, so it's time to wind up the ER model। So ER model advantage। ठीक है, तो पहला एडवांटेज हो गया, प्रोवाइड क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन
Okay. Second one is easy to communicate with non-technical users. Okay. Third one is forms the first step in database design before moving to relational schema. ठीक है. So this is all about the ER model and its advantage. So this is one photo which I got from some websites. So it basically solve like it basically shows like यह डायग्राम होता क्या है. ठीक है. यह डायग्राम हम ड्रॉ कैसे करते हैं और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. सारा एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन को ऐसे रिलेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. कौन सा हमारा वीक एंटिटी है, कौन सा हमारा स्ट्रांग एंटिटी है, कौन सा हमारा डेराइव्ड एंटिटी है, जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा है अभी इसी वीडियो में. ठीक है. एंटिटी अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे. जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, एंटिटी यहाँ पे देख रहे थे ना. तो कौन सा हमारा वीक एंटिटी है, स्ट्रांग एंटिटी है, या फिर एट्रीब्यूट क्या है, उसका एट्रीब्यूट चार टाइप हम लोगों ने देखा. तो यहाँ पे जो है उसका समराइजेशन है, समरी है एक तरह से. ठीक है. कि इस तरह से देखिए हम लोग जो ड्रॉ करते हैं एक ईआर मॉडल. ठीक है. सबसे पहले इसको समझते हैं. तो ईआर मॉडल फॉर फार्मेसी स्टोर इंफॉर्मेशन. तो ये फार्मेसी का इंफॉर्मेशन कुछ हमको दे रहा है. तो सबसे पहले हम इंटिटी देख लेते हैं. तो इसमें क्या है, तो जितना भी ब्लू कलर से, जैसे आपका हो गया ड्रग मैन्युफैक्चर, ड्रग, पेशेंट, डॉक्टर, एम्प्लॉय, फार्मेसी, दिस ऑल आर द एंटिटीज. एंड ये जो आपका डायमंड शेप में है जो कि ग्रीन में है, वो आपका रिलेशनशिप दिखा रहा है. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द ईयर डायग्राम. सो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. अभी तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गया होगा कि ईयर डायग्राम होता क्या है, इसका यूज क्या है. ठीक है. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो आगे बढ़ते हैं अब. सो हमारा लास्ट मॉडल आ गया है अब, विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है. ठीक है. तुरंत निपटा देते हैं. देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. ठीक है. तो ये क्या होता है, कंबाइन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग विथ डेटाबेस. आप लोग को उप्स का कॉन्सेप्ट पता है ना, बस वही. स्टोर डेटा एज ऑब्जेक्ट which include attribute प्लस मेथड, जिसको आप फंक्शन भी बोलते होंगे. एंड फॉर एन एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड लाइक अ स्टूडेंट इज अ ऑब्जेक्ट विथ एट्रीब्यूट नेम और एज. ठीक है. एंड मेथड इज कैलकुलेट एवरेज मार्क्स. तो मैंने आपको पहले ही बोला, मेथड जो है वो एक फंक्शन होता है. तो आपका कैलकुलेट एवरेज मार्क्स इज अ फंक्शन where while a student is a object with attribute which is name and age. समझ में आ गया होगा आई होप. सो देर इज सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑल्सो. सो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो और टाइम ज़्यादा लगेगा लिखने में. सो एडवांटेज इज लाइक गुड फॉर मल्टीमीडिया, कैड एंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप. ओके.
but there is some disadvantage also, like less common than relational model. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम बढ़ते हैं। आप लोग जितना भी मैं बोला हूँ ना, जो नोट नहीं किया हूँ, उसको आप लोग प्लीज नोट कर लेना, ठीक है, आपके नोट्स में हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट इज लेवल ऑफ डेटा मॉडल। सो लेबल्स ऑफ डेटा मॉडल, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द एब्स्ट्रैक्शन, now we'll see like the level of data model though. So the first one is conceptual conceptual data model. Second one is logical data model. Now the third one is physical data model. फिजिकल डेटा मॉडल, ठीक है। तो अब हम लोग कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल समझेंगे। तो इट इज हाई लेवल व्यू ऑफ डेटा, okay, and used in database design, for example ER diagram, ठीक है। ना लॉजिकल डेटा के बारे में हम लोग समझ सकते हैं, डिफाइन टेबल एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप, ठीक है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल स्टोरेज, ठीक है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल स्टोरेज, ठीक है। इसको ठीक कर लेने दो थोड़ा सा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फिजिकल डेटा मॉडल। तो डिस्क्राइब हाउ data is actually stored in hardware like files, indexes, etc. Okay. So let's comparison of model. Let's compare the all models. Okay. So in the quick cap you guys will have while summarizing the all models, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडल लिख लेते हैं, ठीक है। मॉडल हो गया मेरा। स्ट्रक्चर, उसका कैसा स्ट्रक्चर रहता है, एंड बेस्ट फॉर एंड लिमिटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हायरार्किकल। हायरार्किकल का स्ट्रक्चर क्या होता था? ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज बेस्ट फॉर वन टू मेनी डेटा, ओके। एंड लिमिटेशन इज
rigid structure. ठीक है. Now the second one is network. So network is like a graph, and graph like a structure, complex relationship, okay, and complex design. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल. ठीक है, तो रिलेशनल के बारे में देख लेते हैं. तो इसको टेबल स्ट्रक्चर, टेबल लाइक स्ट्रक्चर एंड जनरल पर्पस. ठीक है, और इसका लिमिटेशन क्या है? परफॉर्मेंस ऑन हाई या लार्ज डेटाबेस. डेटाबेस. ओके. Now the next is ER model, and it is a diagram. Okay. Or database design. Database design. Okay, it is design, and not directly, not di directly implementable. Implementable. Okay. And the last one is object oriented. Object oriented. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा, इसको जो है स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट होता है, एंड मल्टीमीडिया, मीडिया एंड लेस पॉपुलर. ठीक है. तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूँ. ठीक है. तो तो इन द comparison of models, so first we have hierarchical model whose structure is like a tree, जो कि हमारा बेस्ट फोर है, वन टू मेनी डेटा, and there is some limitation which is rigid, like a rigid structure. ठीक है. Now the second is network, जिसका स्ट्रक्चर ग्राफ टाइप का होता है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया अभी इसी वीडियो में. एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है, बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, एंड लिमिटेशन इज कॉम्प्लेक्स डिजाइन. ठीक है. रिलेशनल मॉडल होता है जो कि टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जनरल पर्पस ऑफ डीबीएमएस, मतलब हमारा डीबीएमएस में हम कुछ भी डेटा स्टोर कराते हैं तो टेबल के फॉर्म में ही जनरली कराते हैं. ठीक है. तो इसका जो है लिमिटेशन हो गया कि परफॉर्मेंस ऑन वेरी लार्ज डेटाबेस इट इज लेस effective. Okay. Now the ER model, so it nothing but it's a diagram. It's a structure like a diagram, and it is based for database design, and limitation is not directly implementable. Okay. And the last is OOPS, which is object oriented. It's a structure like objects, and it is based for multimedia, and the CAD app you can take it for example. I have not written there, and it is very less popular. ठीक है. So let's moving towards the summary of our video. So we have discussed like data model,
define how data is stored and related and managed in database management system. And we have also discussed the main type like hierarchical, network, relational, ER, and object-oriented models. And we have also talked about the ER diagram, ER model in detail. And we have also see the relation model in the most widely used because of its simplicity and SQL support. और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि मॉड्यूल कैन बी व्यू at the different level like conceptual, logical, and physical. So this is all about the today's video. I hope this video is really helpful for you, and I really hope like you have enjoyed this video. And in the conclusion, like I am concluding the third video of the DBMS series. So हमको लगता है कि आप लोगों के लिए ये डेटा मॉडल जो है वो इजीली समझ में आपको आया होगा। एंड अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए हमारे यू वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है इसको अच्छे से समझ सकें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा टीवीएमएस का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। तो हम देखते हैं उसमें क्या हम लोग टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। आज का वीडियो वैसे ही जो 1 घंटा से ऊपर हो गया है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।